हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल बाय 2.0। इस वीडियो में हम लोग DFCCL की जो एग्जीक्यूटिव सिविल 2016 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके सारे टेक्निकल पोर्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एन एक्टिवेटेड कार्बन इज स्पेशली ट्रीटेड कार्बन विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड अट्रैक्टिंग इम्प्यूरिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज और आर नॉट अमंग द एडवांटेज ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन। ए है इट मिनिमाइजेज द क्लोरीन डिमांड ऑफ ट्रीटेड वाटर। बी इट एक्सलरेट द कोगुलेशन। सी इट ओवरडोज इज हार्मफुल। तो इसमें पूछा गया है फ्रेंड कि इनमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट ओवरडोज इज हार्मफुल। ये एडवांटेज में नहीं आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट अमंग द मेजर लिमिटेशन ऑफ द स्प्रिंकलर इरीगेशन। ए स्ट्रॉन्ग विंड डिस्टर्ब द स्प्रिंकलिंग। बी इट रिक्वायर हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सी इट मिनिमाइजेज द इरोजन ऑफ द सॉइल। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। Which one of the following is not among the type of signal classified on the basis of their functions? Right answer option number 3, advanced starter signals. For as recommended in IS 456, match the following according to the recommended slumps for various concrete work and select the correct answer using code as given below. तो फ्रेंड इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग देखिए जो पेवमेंट का होगा, पेवमेंट मैच करेगा ऑप्शन नंबर 2 से 50 से। अनरेनफोर्स्ड फुटिंग करेगा 75 से। रेनफोर्स्ड फाउंडेशन करेगा 100 से और कॉलम करेगा 125 से। ये स्लम वैल्यू है। नेक्स्ट, विच टर्म इज अप्रोप्रिएट फॉर द ब्रांच ऑफ फिजिकल जियोग्राफी विच डील्स विद द ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, हाइड्रोलॉजी। इन विच टाइप ऑफ फाउंडेशन द लेंथ इज कंसिडरेबली ग्रेटर देन इट्स विड्थ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रिप फुटिंग। Dash is the algebraic sum of the moments of the forces on either side of the section of a loaded beam. Right answer option number 4, bending moment. Question number 8, assume L is the load in Newton and A is cross sectional area, then stress denoted by S is equal to। तो यहाँ हम सभी जानते हैं फ्रेंड कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है L और एरिया दिया हुआ है A। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, S इज इक्वल टू L बाई A। क्वेश्चन नंबर 9, A 8 mm thick copper sheet is cut with a 9 cm diameter round punch. If the punch exerts a force of 16 kN, find the shear stress in the sheet. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 7.08 MPa। ये रहा सॉल्यूशन फ्रेंड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सॉइल मैकेनिक्स विच टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट फुल्ली कंसोलिडेटेड अंडर द एग्जिस्टिंग ओवरबर्डन प्रेशर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल। Question number 11, dash is the normal stress when it acts into the area. Right answer option number 3, compressive stress. Question number 12, according to the assumption of Tarjagi's one-dimensional consolidation theory, which of the following statement are incorrect? A, the soil is homogeneous. B, the soil is 100% unsaturated. C, the soil is laterally confined. Right answer option number 4, only B। ये जो B है वो incorrect है फ्रेंड। Question number 13, which of the following statement are true about the type of gauge in Indian Railway? 1, in broad gauge the clear distance between the inner face of two rail is 1.676 मीटर। तो ये बिल्कुल राइट है। इन मीटर गेज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ टू रेल्स इज 1.240। तो ये बिल्कुल गलत है। ये सही है, ये गलत है। थर्ड, इन नैरो गेज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेस ऑफ टू रेल्स इज 0.762। तो ये राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 राइट है। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, 1 एंड 3। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। ए, द लोड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द बीम एक्सिस। द बीम बेंड टू ए सर्कुलर आर्क। द बीम इज इनिशियली स्ट्रेस ऑफ कॉन्स्टेंट क्रॉस सेक्शन। तो इसमें तीनों का तीनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। A project engineer collects a sample of red soil having most unit weight of a soil is 18.5 kilonewton per meter cube. Water content available is 22% and specific gravity of the solid of the soil is 2.85. Find the void ratio. Assume unit weight of water 9.8 kilonewton per meter cube. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 0.84। ये रहा सॉल्यूशन फ्रेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, dash is an engineered material that contains cement, polymers and glass fiber.
It is mainly used in concrete product including ornamental structure, fountains, domes, etc. Right answer option number 1, glass fiber reinforced concrete. Question number 17. According to the level of pressure applied, lateral earth pressure is classified into various types. Which of the following type of lateral earth pressure refers to the minimum pressure exerted by the soil on the retaining wall? Right answer option number 2, active earth pressure. 18. In the pile foundation, which type of pile act as column and transmit the load through weak soil to a firm stratum to a greater depth? Right answer option number 2, in bearing piles. Question number 19. What is the name of the method of design of a reinforced cement structure in which optimum use of inherent strength of both steel and concrete is made? Right answer option number 4, ultimate load strength design. Question number 20. Which of the following factor affect the per capita demand of water? ए है क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन, ये सही है. इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द रीजन, ये भी डिपेंड करता है, अफेक्ट करता है. सी पॉपुलेशन, ये भी अफेक्ट करता है. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ए, बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 21. इफ आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर एंड सी इज द कॉर्ड लेंथ इन मीटर, what would be the expression to denote versine v in millimeter? Right answer option number 3, v is equal to 125 c square by r. Next, question number 22. A surveyor made an error during the survey of a project which is associated with his skills and vigilance. Which type of error this surveyor has committed? Right answer option number 1, random error. Question number 23. Dash is used in concrete to provide economy in the cost of material. It is used as filler only and do not react with cement and water. तो right answer हो जाएगा option number 3, aggregate. Question number 24. Which apparatus is used to perform the soundness test of cement? Right answer option number 1, Lee Chatelier's apparatus. Question number 25. Which of the following typical arrangement of points and crossing is being drawn in the figure shown above? Right answer option number 1, tandem. फ्रेंड ये जो फिगर है वो टेंडम का फिगर है, इसे टेंडम बोलते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल रेनफोर्सिंग मटेरियल? ए, इट शुड बी इजीली अवेलेबल इन बल्क एंड एट लो प्राइस. It should not possess high tensile stress and elasticity. It should be free from loose mills scale, loose rust and coat of paints. तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली बी. इट शुड नॉट पोसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेस एंड इलास्टिसिटी. क्वेश्चन नंबर 27. अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी, दैट मीन igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. In which category granite, basalt, dolerite, etc. type of rock falls? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, igneous rocks. Question number 28. When a liquid rotates at constant angular velocity about a vertical axis of a rigid body, right answer option number 1, the pressure varies as the square of the radial distance. Question number 29. According to Hooke's law, a material is said to be elastic if it returns to its original unloaded dimension when load is removed. It can be expressed as, right answer option number 1, stress by strain is constant. 30. Question number 30. In which type of joint plates to be fastened are placed one over the other and riveted by one or more rows of rivets? Right answer option number 4, lap joint. Next, soil scientists collect unsaturated 200 cm³ sample of soil having weight 220 gram. If the dried weight of soil is 180 gram, then find the water content available in the soil. Right answer option number 1, 0.222. ये रहा सॉल्यूशन फ्रेंड्स. Next, question number 32. The 4 kinds of crystal in thin section of cement clinker named by Tornebohm are alite, belite, selite, and right answer option number 4, phelite. Question number 33. In the given image, read the observation carefully which were taken during the test of a dumpy level. तो फ्रेंड इंस्ट्रूमेंट जब पी पे रखा गया था तो स्टाफ रीडिंग पी और क्यू पे कितना कितना आ रहा था वो सब दिया हुआ है. तो बोल रहा है कि टू व्हाट रीडिंग शुड बी लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन बी एडजस्टेड व्हेन द इंस्ट्रूमेंट वाज एट क्यू. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1.146 मीटर. ये रहा सॉल्यूशन. नेक्स्ट, an open cylindrical tank of 2 meter diameter and 4 meter high contains water up to 1.5 meter depth. If the cylinder rotates about vertical axis, what angular velocity can be attained without spilling any water? Right answer option number 3, 9.9 radian per second. ये रहा सॉल्यूशन. Question number 35. What would be the approximate weight of rail required for a particular track if the weight of locomotive axle load is 15,000 tons? Right answer option number 3, 29,410 tons.
फ्रेंड्स इसका ये एक फार्मूला से निकल जाएगा फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे जो ये टन्स दिया है वो टन्स नहीं हो जाके केजी हो जाएगा। नेक्स्ट, what value of tensile stress is required to produce a strain of 10 into 10 to the power minus 4 in copper? Find the result. Find the result in MPa. Assume Young's modulus of copper is 50 GPa यानी कि गीगा पास्कल। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू स्ट्रेन कर देना है, और यहाँ पे बस यूनिट कन्वर्सन करना है। तो ये इसका भी सोल्यूशन ये रहा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट द प्रिज्मेटिक कंपास? A. The needle is broad but it does not act as an index. B. The graduated ring is attached with the needle. This does not rotate along with the line of sight. C. The readings are taken directly seeing through the top of the glass. So right answer option number third, only C. Question number 38. Which of the following statement describes the limitation of concrete technology? A. Availability of concrete ingredients is easily. B. Due to low tensile strength, concrete is required to be reinforced to avoid cracks. C. Monolithic character gives better appearance. डी द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट पॉसेस हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू लो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी रेनफोर्स्ड टू अवॉइड क्रैक्स। नेक्स्ट, void ratio is the ratio of the volume of the void to the volume of the soil solid, and porosity of the soil mass is the ratio of the volume of voids to the volume of given soil. What would be the expression to relate these two terms? Right answer option number 3, n is equal to E by 1 plus E. Question number 40. Calculate the approximate specific energy of a trapezoidal channel having a bottom width of 6 meter, ratio of side slope is 1:1, and depth of flow at a discharge speed of 15 cubic meter per second is 1.5 meter. तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1.6 ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41. A soil engineer collects a sample of soil which having most unit weight of a soil is 25 kilonewton per meter cube. Water content available is 50% and specific gravity of the solid of soil is 2.55. Then what is the value of porosity of soil mass? Assume unit weight of water 9.8 kilonewton per meter cube. तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 2, 33%। ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42. Assume initial void ratio E naught, final void ratio E, initial pressure P naught and final pressure P. Then what is the value of coefficient of compressibility AV? The right answer option number 2, AV is equal to E naught minus E by P minus P naught. Question number 43. As per the specification designed by the railway board of trunk route on broad gauge track, the design speed of new track is dash and the maximum speed permissible is dash. The right answer option number 1, 160 and 120. Design speed 160 kilometer per hour and maximum permissible speed 120 kilometer per hour. Next, question number 44. Which constituent of good brick earth added in small quantity during the manufacturing of bricks to give yellow tint to brick and decrease shrinkage? Right answer option number 1, magnesia. Next, at constant temperature, the fluid whose viscosity does not change with the rate of deformation is called. Right answer option number 4, Newtonian fluid. Next, question number 46. Why steel is commonly used as a good reinforcing material? A. It is cheaply available in bulk. B. The thermal coefficient is nearly equal to concrete. C. It possesses low tensile strength. D. It develops good bond with concrete. Right answer option number 2, A, B and D. तो फ्रेंड इस C को छोड़ के सारा सही है। नेक्स्ट, a project engineer receives a laboratory report of sample of soil having most unit weight of a soil is 20.5 kilonewton per meter cube. Water content available is 25% and the specific gravity of the solid of the soil is 3.35. Find the dry unit weight of the soil. Right answer option number 4, 16.4 kilonewton per meter cube. ये रहा solution friend. Next, question number 48. The type of concrete in which preliminary tests are performed for designing the mix and it is also used for all the 7 type of grade of cement is known as. Right answer option number 2, controlled concrete. Question number 49. In the soil mechanics and foundation engineering, the ratio of the density of the solid to that of water at a given temperature is termed as dash of soil solid. Right answer option number 1, specific gravity of soil solid. Question number 50. Match the grade of brick with select the correct answer as per the codes given below. तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है, एक तरफ ग्रेड दिया हुआ है, तो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ग्रेड से मैच करना है। तो पहला है फ्रेंड नॉट लेस देन 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका जो होगा वो हो जाएगा ग्रेड ए। सेकेंड है नॉट लेस देन 105 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेड 1, ग्रेड ए। सी है नॉट लेस देन 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी, ग्रेड बी, एंड लास्ट में ग्रेड सी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट,
Question number 51. In an open field, two parallel pipes lines are to be connected by a reverse curve, each section having the same radius. If the center lines are 20 meter apart and the maximum distance between tangent points is 40 meter, what is the maximum allowable radius that can be used? Right answer option number 1, 20 meter. ये रहा solution friends. Next. Which of the following statement is are not correct as per the requirement specified by IS 383/1970 for an ideal aggregate used for manufacturing of concrete? A. It should be hard, strong, and durable. B. It should be contain flaky and elongated piece. It should be dense, clear, and free from any coating. D. It should consist of natural stone, gravels, and sand. Right answer option number 3, only B. It should contain flaky and elongated pieces. तो फ्रेंड इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी में दिया हुआ है थर्ड में, ऑप्शन नंबर बी वो गलत है. Next, question number 53. The shear strength is a most important characteristic of the soil. What is are the correct reason due to which the shear resistance of the soil occurs? A. Cohesion. B. Structural resistance. C. Friction. Right answer option number 2, A, B and C. ये तीनों के तीनों important है फ्रेंड shear strength के लिए. shear strength इन्हीं तीनों की वजह से अकर करता है मतलब. Next, which of the following characteristics of the rainstorm can completely describe the rainfall at a place? A. Intensity of the rain. B. Duration of the rain. C. Hydrograph. D. Frequency of the rain. Right answer option number 4, A, B, C and D. Which type of beam is supported only at one end by being built into a wall? Right answer option number 2, cantilever beam. Question number 56. What is the name of the process in which reducing chemicals such as sulfur dioxide SO2, sodium trisulfite NaHSO3 and sodium sulfite Na2SO3 is added to remove unwanted residual of chlorine from water? Right answer option number 3, dechlorination. Question number 57. Dash is the geological formation that does not yield water freely to well due to its lesser permeability? Right answer option number 3, aquitard. Aquitard is the geological formation that does not yield water freely to well due to its lesser permeability. Question number 58. Dash is the crude impure iron which extracted from iron ores? Right answer option number 3, pig iron. Question number 59. A train has to run on a broad gauge track having a curvature of 3 degree and cant of 100 mm. What would be the maximum permissible speed of this train if the allowable cant deficiency is 76 mm? Right answer option number 4, 88.2 km per hour. ये रहा solution friend. Next, question number 60. Dash is the type of concrete in which internal stresses are intentionally induced in a planned manner such that the stresses resulting from the superimposed load get counteracted to a desired degree. Right answer option number 4, pre-stressed concrete. Question number 61. A 58 kN compressive load is applied to a 7 cm diameter, 2 cm tall aluminum cylinder. Calculate the value of stress in MPa. Right answer option number 3, 15.08 MPa. ये था solution friend. Next, question number 62. A 10-inch long silver wire is stretched to a total length of 11.5 inches. Find the value of strain. तो फ्रेंड ये तो आपको तरह से गोलगप्पे मिल गए. ये सबसे इजी क्वेश्चन यही होगा फ्रेंड. तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है फ्रेंड चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ. तो यहाँ पे 11.5 में 10 को माइनस कर दीजिए, अब बाय 10 कर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 0.15. क्वेश्चन नंबर 63. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काउज ऑफ बकलिंग? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काउज ऑफ बकलिंग? Right answer option number 4, due to contraction of rail track in winter. Question number 64. Which of the following types of chemical weathering is associated with the feldspar which can be found in granite changing to clay? Right answer option number 2, hydrolysis. Question number 65. Match section 1 with section 2 and select the correct answer using code as given below. सेक्शन 1 में फ्रेंड अलाइनमेंट दिया हुआ है, सेक्शन 2 में टोपोग्राफी दिया हुआ है, तो आपको इन सबको मैच करना है. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा. जिग जैग अलाइनमेंट जो होगा स्लोप विथ डीप वैली. क्रॉस कंट्री अलाइनमेंट तो इसका हो जाएगा 1. सैग एंड समिट इन सक्सेशन. स्विच बैक डेवलपमेंट तो इसका हो जाएगा 4. 1 स्टीप रेगुलर स्लोप. वैली अलाइनमेंट हो जाएगा 2. 1 स्लोप ऑफ वैली. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66. डैश इज ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर इलास्टिक सॉलिड मटेरियल्स विच डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन ए मटेरियल? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यंग्स मॉडुलस. Question number 67. If H1 is the height of liquid surface above the orifice top, H2 is the height of liquid surface above the orifice bottom, B is width of orifice, and CD is the coefficient of discharge, what would be the expression to calculate the discharge denoted by Q? Right answer option number 4, 2 by 3 CD into B root under 2G H2 का power 3 by 2 minus H1 का power 3 by 2. Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन? ए क्रशिंग स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 1000 kg per centimeter square. बी स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन 8. सी स्टोन शुड बी well seasoned before putting into use. Right answer option number 3, A, B and C. Question number 69. There are three distinct stages occurs in the natural process of sludge digestion due to biological action. What is the name of the first stage in which fresh sewerage sludge is acted upon by an anaerobic and facultative bacteria which decompose easily available food matters? Right answer option number 2, acid fermentation. Question number 70. Which among the following is are the correct assumption made in torsion formula? A. Material is the shaft is uniform. Material of the shaft is uniform throughout. B. Twist along the shaft is uniform. C. Plane section before twisting remain plane after twisting. D. Circular section before twisting remains circular even after twisting. Right answer option number 1, A, B, C and D. Question number 71. Which one of the following formula is correct to express the bond stress BS? Assume shear force at the section is equal to Q, lever arm JD and sum of the perimeter of bars is S. Right answer option number 3, BS is equal to Q by JD into S. Question number 72. Dash is the rigid dam which constructed either with the stone or brick masonry or mass concrete. Right answer option number 1, solid gravity dam. The ratio of the lateral strain to that of longitudinal strain which remains constant with elastic limit is called as, right answer option number 4, Poisson ratio. Question number 74. What is the main disadvantage of aeration process? Right answer option number 2, excessive aeration absorbs too much oxygen and thus water becomes corrosive. Question number 75. A soil engineer collects a sample of soil having most unit weight of soil is 24.5 kN per meter cube. Water content available is 10% and the specific gravity of the solid of the soil is 2.5. What is the degree of saturation of the soil? Assume unit weight of water is equal to 9.8 kN per meter cube. Right answer option number 1, 250%. ये रहा सॉल्यूशन फ्रेंड. Next. Question number 76. A surveyor assumes P as difference in the elevation between point X and Y. Slope having slope S. What will be the expression to calculate slope correction? Right answer option number 1, P square by 2S. तो ये सभी आप सभी जानते हैं फ्रेंड, ये फॉर्मूला होता है. तो नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 77. A 10-meter aluminum flagpole is installed at 30 degrees Celsius. After 2 days, the temperature drops to minus 10 degrees Celsius. How much does the height change of the flagpole in mm? Assume thermal expansion coefficient for aluminum is equal to 23 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius. Right answer option number 4, 9.2 mm. ये रहा सॉल्यूशन फ्रेंड. नेक्स्ट. Question number 78. Which of the following statement are true about the advantage of pre-stressed concrete structure? A. In the pre-stressed concrete structure, deflection of beam is considerably reduced. B. Pre-stressed decrease crack in. तो A फ्रेंड यहाँ पे सही है. Pre-stressed decrease cracks in concrete under all stage of loading, ये भी सही है. Pre-stressed concrete require only 1/3 of the concrete required for RCC, ये भी सही है. यानी कि ऑप्शन नंबर 3, A, B and C. Question number 79. The equilibrium super elevation or Kant necessary for any speed is calculated from the formula. Right answer option number C. Option number 4. C is equal to GV square by 127 R. Question number 80. As per IS 456 1978, the concrete mixes have been designated into 7 grades. Which one of the following 7 grades given below is not the correct grade of concrete mix? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड M5. फ्रेंड यहाँ पे M50 जो लिखा है वो M5 हो जाएगा. M100 जो लिखा है वो M10 है. तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, M5. 7 ग्रेड में नहीं आता फ्रेंड, जो IS कोड में दिया हुआ है. तो ये थे फ्रेंड हमारे 2016 के जो DFCCL में एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए पूछे गए क्वेश्चन थे. अगर वीडियो अच्छी लगी हो कि मैंने बहुत मेहनत से सॉल्यूशन दिया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं.